Hello and welcome. Now we are going to see some examples on vector moments, couples, whose theory already we have studied. Now let us start with the first example. Find the vector moment of a force F bar of magnitude 10 units acting at a point 1, 2, 3. The coordinates of the point is given. The force is acting at that point. The name is not given, but for our convenience we can put or we can declare or we can assume one particular name for that point. And the force is acting in the direction of the vector. The vector is in the standard form 2i plus j plus 2k about the point. And also here the name is not given. So overall, when I read this example, then what is my understanding? So in this example, clearly they are asking find the vector moment. Do you know the formula how to get the vector moment? It's very simple. To get the vector moment, you need one force. Number one, you need force. Number second, you need a point where the force is applying. If I am supposing that point is capital P, then it's okay. And third one is about which point you have to calculate the vector moment. So three ingredients are very important to solve this example. So first I have read this. The force is given, but the expression of the force is not given. They are saying something, the force whose magnitude is 10 units means I wish to construct, I have to construct such a force. See, force is a vector quantity, and for vector quantity we need magnitude as well as direction. So if we want to construct a force, then we need two parts of that force. That is, one is the magnitude and it is given 10 units. 10 units is the magnitude of that force. And another thing is what we need, that is a direction. But here the direction of the force is in the direction of a vector. So that means instead of giving direct expression of force, they are saying that the force is something whose magnitude is 10 units. And that force is in the direction of the given vector 2i plus j plus 2k. So that vector is providing us direction of the force and magnitude is already given. So that's why from this information we have to construct the expression of force. And how to construct that? You first take the vector in which direction the force is given. You convert that vector into unit vector first. Why we are converting the vector into unit? क्योंकि unit means उसका magnitude 1 होता है और 1 को आप जिस मैग्नीट्यूड को लाना चाहते हो उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर सकते हो. दैट्स वाई पहले आप वेक्टर जो दिया है, जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स चाहिए, वो वेक्टर लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए. अगर उसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 1 है तो फाइन, वो ऑलरेडी यूनिट है. अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो उसी मैग्नीट्यूड से उसी वेक्टर को डिवाइड कीजिए. When you divide the same vector by its magnitude, then you will get another vector, that is unit vector. Once you got unit vector, then multiply a number
that is here in this case the number is 10, magnitude of the force is 10, then you will get vector whose magnitude is 10. So direction we are maintaining, magnitude we are creating, and therefore in this way we can construct a required force. और एक बार आपको फोर्स मिल गया, फिर वो जो पॉइंट है जहां पे वो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको आप P नाम दीजिए, और आपको मोमेंट जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उसको आप कैपिटल A नाम दीजिए, और फिर P और A को आप सेगमेंट से जोड़ दीजिए. एंड देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वेक्टर मूवमेंट you can write vector moment of F bar about A is equal to the formula is something like that. What is the formula? That R bar is AP bar. जहां जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है वो पॉइंट से P को जोड़ना है, तो AP bar take its cross product with that force, then you will get vector moment. So it's so simple. The only thing is कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है, तो पहले हम अब ये दिस इज योर स्किल ऑफ प्रेजेंटेशन. क्वेश्चन को समझना, हाउ टू सॉल्व, उसका प्रिपरेशन अपने माइंड में करना, ब्रेन में करना. अब जो भी आपने सोचा है कि मुझे इसका आंसर ऐसे लिखना है, उसको एग्जीक्यूट अच्छे से करना. दैट इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. तो अब यहां पर गिवन वेक्टर को अगर हम स्मॉल a बार नाम देते हैं, सो गिवन, तो यहां हम लिखते हैं गिवन a बार इज इक्वल टू, दिस इज गिवन टू यू, 2i प्लस j प्लस 2k. All right. Therefore, this is a symbol to denote its magnitude. How to get the magnitude? Square root of squaring and adding of all the components of this vector. The first component is 2, it's a square, plus second component is 1, it's a square, and third component is 2, it's a square. So after simplifying this, it is a square root of 4 plus 1 प्लस 4. सिंपल एडिशन कीजिए, वो आएगा 9 एंड 9 का रूट आएगा 3. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर a बार इज 3. आई एम नॉट गेटिंग 1, देयरफॉर इट्स नॉट अ यूनिट वेक्टर. तो पहले इसको यूनिट बनाना है. वैसे यूनिट बनाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि मुझे फोर्स 10 यूनिट का बनाना होता है. अगर इसका मैग्नीट्यूड 3 है तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि इस मैग्नीट्यूड को, अभी जो दिख रहा है 3 को, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं मैं तो मुझे 10 यूनिट मिलेगा. और ये सोचना में भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. दैट्स व्हाई यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, और फिर अपनी मर्जी जो अपने को मैग्नीट्यूड लेना है फोर्स का, जो मैग्नीट्यूड चाहिए, उस मैग्नीट्यूड से उस यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना काम हो जाएगा. लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर वेक्टर को आप यूनिट बनाएं. आप डायरेक्ट भी ऐसा बोल सकते हो कि जस्ट मल्टीप्लाई बाय 10/3. तो ये 3 को जब आप 10/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड विल बिकम 10. तो आवर मोटिव इज टू बिल्ड सच अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 3. और इसी वेक्टर से बनाया, इसलिए डायरेक्शन तो इसी वेक्टर की रहेगी. वही तो हम चाहते हैं क्योंकि हमारा फोर्स उसी डायरेक्शन में है. राइट. सो अगर आप यूनिट वेक्टर बनाना चाहते हो तो यूनिट वेक्टर को यूजुअली हम a कैप से डिनोट करते हैं, a कैप, एंड दैट इज 1/3. दैट इज अ मैग्नीट्यूड 1/3, एंड दिस इज 2i प्लस j प्लस 2k. दिस इज अ यूनिट वेक्टर. राइट. एंड डायरेक्शन तो वही रहेगी, सिर्फ हमने इसका मैग्नीट्यूड को यूनिट कर दिया. अब इसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स है और फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 है, तो इस यूनिट वेक्टर को वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10. सो देयरफॉर F bar, this is our force,
is equal to, this is a 10 into, this is A cap. And therefore, your F bar will become like this. F bar is equal to 10 by 3, okay, 10 by 3, 2I plus J plus 2K. Now, this is our required force. Now, this force is acting at point 1, 2, 3. So, now I am labeling that point by some letter. तो हम देते P. तो let capital P, whose coordinates are 1, 2, 3, और वो जो about the point वाला point है उसको भी हम नाम देंगे, उसको नाम देते capital A. Capital A, whose coordinates are 2, 3 and 1. Now, in this example, we have to calculate the vector moment about the point A. So that's why join that point A to P. So you'll get AP bar. So therefore, I have to calculate the position vector of this P with respect to A. And therefore, AP bar, how we can write this? AP bar is equal to position vector of P. Position vector of P is I plus 2J plus 3K. पहले कंपोनेंट को I से मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंड कंपोनेंट को J से और थर्ड कंपोनेंट को K से, एंड उसका लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन लीजिए, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. तो ये देखिए 2I plus 3J, and this is 1 into K means K. Now just simplifying this, I minus 2I, this is minus I, plus 2J minus 3K, this is minus J, and 3K minus K, that is plus 2K. So this is your AP bar. Now F bar is in our hand. AP bar already we have calculated. Now the time is just calculate vector moment of this force about the point O. So that's why you write the statement which what you want to calculate. So just I am writing therefore vector moment of the force F bar about the point A, and this is equal to A P bar, this vector cross with F bar. Now only thing remaining is just calculate the cross product of these two vectors. One is AP bar and another is F bar. How to calculate this? Basic definition of the cross product is we can evaluate the cross product of two vectors by using the determinant. So I am writing here that is equal to determinant. Okay, the first row of the determinant is unit vectors along the axis, that is I, J, K. So here first element of the first row is I, then second is J, and third is K. Now in the second row of this determinant, I have to write components of the first vector. So the components of the first vectors are minus 1, see, again minus 1 and 2, right? And last, in the last row, we have to write the components of the second vector of the cross product, that is F bar, and the components of the F bar is 10 into 2, 20 upon 3. So you write 20 upon 3.
Then second component is 10 by 3 into 1, that is 10 by 3. And 10 by 3 into 2, that is again 20 upon 3. Alright. Now only work remaining, that is simplification of this determinant. आता ही होगा आपको determinant solve करना. So how to solve the determinant? This is equal to, just I am writing now, equal to, this is the first element of the first row, I am writing here, I. Okay. Now you just ignore the first row and first column from this determinant. You can observe these 4 elements, 4 entries in the determinant. You take the product of in this direction first, so it will become minus 20 by 3. Use the minus sign, come here again, and you multiply in this way. So it is again 20 by 3. Complete the bracket. Now you go for the second element of the first row. While considering the second element of the first row, you have to give the minus sign. This is the rule to evaluation of determinant. So it is J. Now you just ignore this first row and second column. While ignoring the first row and second column, you will get these 2 elements or these 2 numbers. Now you multiply in this fashion. First multiply minus 1 into 20 upon 3, that is minus 20 upon 3. Give the minus sign according to rule of determinant. Now you multiply this. This is the 40 upon 3. Alright. Now you write the third element of the first row. Ignore the first row and third column. You will get these 2 and multiply this. It will become minus 10 by 3. Minus 10 by 3. Give the minus sign and then multiply these 2. So it will become again minus 20 by 3. So this minus 20 by 3, and already we have written minus. So minus minus become plus, so it is 20 upon 3. Wow, हो गया. अब जस्ट सिंपल इसका एडिशन वगैरह जो भी है करना है वो है इसका एडिशन आएगा minus 40 upon 3. This is I. Okay, ये हो जाएगा minus 60 upon 3. Minus 60 upon 3 is something minus 20. That minus and this minus will become plus 20j, and this is 20 minus 10, that is 10 by 3k, so it is plus 10 upon 3k, and I think this is the final answer. Okay, this is the vector moment, required vector moment. It's very interesting, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. Next example. If a force F bar of magnitude 8 units, again magnitude is given, act at a point. अभी यहां देखिए इन्होंने P नाम दिया है, coordinates भी दिए हैं. Along the line, in the previous example, along the vector दिया था. अब इन्होंने वेक्टर छुपाकर लाइन 3 डायमेंशन लाइन का इक्वेशन दिया है, और इस 3 डायमेंशनल लाइन में फर्स्ट ईयर में आपने देखा है कि x का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, z का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. अगर है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो वो कोएफिशिएंट आप 1 कर लीजिए डिवाइड करके, और ऑल दे आर रेशो इन द रेशो फॉर्म. लेकिन यहां पर एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो जब ये रेशो में x का कोएफिशिएंट 1 होता है तो नीचे का जो नंबर होता है वो इस लाइन की डायरेक्शन का डायरेक्शन रेशो होता है. फर्स्ट ये है डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन, सेकंड डायरेक्शन रेशो 4 है, और थर्ड जो है वो 5.
और ये लाइन की डायरेक्शन ये नीचे के नंबर डिसाइड करते हैं, और ये लाइन की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स भी है। तो यही वो नंबर्स है लाइंस के डिनोमिनेटर के जो हमारे फोर्स की डायरेक्शन को फिक्स करेंगे, और वैसे भी हमको मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो हम क्या करेंगे अब, इस लाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है, लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन से हमें लेना देना है, और इसलिए लाइन के इक्वेशन में जो नीचे होते हैं ये नंबर्स उसको हम डायरेक्शन रेशो बोलते हैं। तो यहां हम लिखेंगे कि डायरेक्शन रेशोज of the given line are, tell me what are the direction ratios? 3, 4 and 5. These are the direction ratios of the line. Therefore vector along the direction of line is equal to, देखिए ये फर्स्ट जो डायरेक्शन रेशियो है वो फर्स्ट है तो उसको I से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस सेकंड को J से मल्टीप्लाई कीजिए, देन ऐड विथ थर्ड वन 5 को K से कीजिए। तो ये है आपका वेक्टर जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स चाहिए। ओके, तो सेम चीज यहां भी आपको ये वेदर दिस वेक्टर विल बी यूनिट और नॉट चेक करना है, और नहीं है तो यूनिट बनाना है। तो लेट उसको हम एक नाम देते हैं ए बार इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k, and now calculate the magnitude of this a bar. It is under root, the square of 3 is 9, the square of 4 is 16, square of 5 is 25. So 9 plus 16 25, 25 plus 25 50, 50 का तो square root निकलता नहीं है, तो now that 50 can be written as 2 times 25, and therefore the square root of 25 is 5 and the root of 2 is root 2. So this is the magnitude of this vector, and therefore we can calculate unit vector of this a bar. So the unit vector is denoted by a cap, and this is a bar divided by its magnitude. So the magnitude is 1 upon 5 root 2, and a bar is 3i plus 4j plus 5k. So this is your what? A cap. Now it will give you only direction of the force with magnitude 1. यूनिट है तो 1 होगा, लेकिन मुझे जो फोर्स चाहिए उसका मैग्नीट्यूड उन्होंने बोला इधर कि वो चाहिए 8। देखिए यहां पर दिया 8। सो दैट्स व्हाई देयरफॉर द फोर्स F bar is equal to 8 times a cap. Therefore the force F bar is equal to, so we can multiply by 8, so 8 upon root 2. You can easily calculate, this is 8 can be written as 4 into 2, और ऊपर जो 2 रहेगा उस 2 को ये root 2 डिवाइड होगा, तो you will get 4 root 2 divided by 5, and these are the components 4j plus 5k. I am keeping as it is. ठीक है, आपको अगर इसको और भी अच्छे से लिखना है तो आप ये जो बाहर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर को आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके हर कंपोनेंट को सेपरेटली लिख सकते हो, तो बेहतर है वो लिखा जाए।
So now I'm writing the f bar is equal to, now this number multiply with 3, so I will get 4 3s are 12 root 2 upon 5 I, then plus 16 root 2 upon 5 j. And now when this number multiply to third term, then 5 get cancelled, and I'm just getting 4 root 2 k. Oh my god, this is a vector. Okay, now this vector is acting at a point P. So P is given, and P is given, then find the moment of force, not a vector moment. यहाँ पर vector moment नहीं बोला है, यहाँ पर हमें सिर्फ बोला गया है moment of the force, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी रहेगी. तो अब स्केलर क्वांटिटी को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, वैसे तो अबाउट द पॉइंट का कोई जिक्र नहीं है, अबाउट द एक्स एक्सिस है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स. देयरफॉर मोमेंट ऑफ दिस एफ बार अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, किसका मोमेंट निकालना है, फोर्स का. तो आप ये फोर्स लिख लीजिए एफ बार, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, जस्ट डॉट प्रोडक्ट अबाउट एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका हम वेक्टर ऑपरेशन जो होते हैं उसमें वेक्टर दोनों चाहिए. एक एफ बार वेक्टर है तो डॉट के बाद दूसरा भी वेक्टर चाहिए. अबाउट द एक्स एक्सिस बोला है तो आपको एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर स्टैंडर्ड होता है, जो आई रहता है अलोंग द एक्स एक्सिस, वो लेना होगा. तो यहां हम लेंगे आई बार. ठीक है. अगर अबाउट द वाई एक्सिस बोला होता तो हम यहां जे बार लेते, अबाउट द जेड एक्सिस बोला होता तो यहां हम के बार लेते. ठीक है. सो नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, इस वेक्टर का कोएफिशिएंट ऑफ आई और इस वेक्टर का कोएफिशिएंट ऑफ आई मल्टीप्लाई होता है. तो एफ बार का कोएफिशिएंट ऑफ आई बार जो है वो 12 रूट 2 अपॉन 5 है, और इधर आई का जो कोएफिशिएंट है वो कुछ नहीं, मतलब भूतनाथ है ना, दिखता नहीं है, 1 है. तो 1 इंटू वो करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो बन जाएगा 12 रूट 2 अपॉन 5 प्लस एफ बार का जे का कोएफिशिएंट लेना है, जे का, और इधर जो वेक्टर है इसका जे का कोएफिशिएंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर जे है ही नहीं, तो यहां जे का कोएफिशिएंट हम लेंगे 0. तो 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0, और यहां पर के का कोएफिशिएंट नहीं है तो वो भी हम लेंगे 0, और वो 0 इस के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 0. And that's why our answer is, this is the final answer, that is 12 root 2 upon 5 units. This is the moment of F bar about the x-axis. तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं.